Good afternoon. We welcome you all on behalf of West Bengal Legislative Assembly to this valedictory session of the orientation program for the members of the 18th Vidhan Sabha of West Bengal. This orientation program has been organized by the Legislative Assembly in collaboration with Parliamentary Research and Training Institute for Democracies or PRIDE. As we all know, that the program was inaugurated yesterday at the Convention Center, Newtown. The members had a technical session on various subjects like how to be an effective legislator, executive accountability through questions and other procedural devices at legislature, committee system, legislative process, and budgetary process. Now, we are coming to an end of this orientation program at this official valedictory session. As the valedictory session marks the official conclusion of our orientation program, it marks the commencement of a new chapter, a chapter of effective governance and public service in our state. Now, we'll commence the program with the national song followed by the national anthem. We may request all to rise.
We now request Sri Rothindra Bose, Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, for his address. সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন। বহুদিন পরে এমন একটা সময়ে আমরা এসেছি যেখানে আমাদের এত সুন্দরভাবে একটা প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হচ্ছে। মাননীয় আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল আর.এন. রবি মহাশয়, মাননীয় লোকসভার অধ্যক্ষ এম. বিড়লা মহাশয়, হরিয়ানার রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী অসীম ঘোষ মহাশয়, সম্মানিত মন্ত্রীবৃন্দ, নবনির্বাচিত বিধায়কবৃন্দ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং প্রণাম জানিয়ে আমি সংক্ষেপে দু চার কথাই বলছি। আজ এই দুদিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সফল সমাপ্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই কর্মসূচি শুধুমাত্র বিধানসভার নিয়মকানুন ও কার্যপ্রণালী জানার সুযোগ নয়, বরং একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ব আরও দক্ষতার সঙ্গে পালন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিকশিত ভারত 2047 এর লক্ষ্যে বাস্তবে সুশিক্ষিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নবনির্বাচিত সদস্যদের সংসদীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি বিশেষভাবে আনন্দিত যে লোকসভা সচিবালয়, পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি প্রাইড এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে এবং জনগণের কল্যাণে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের এই রকম সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা মহাশয়কে। উনার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং উনার যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে গভীর অনুভূতি, সেটার জন্য আজকে এটা আমাদের সম্ভব হচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে সকল সম্মানিত রিসোর্স পার্সন, অতিথিবৃন্দ এবং কর্মসূচির সফল আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকল কার্যকর্তা এবং কর্মচারীদের আবার ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি এই 2 দিনের শিক্ষা অভিজ্ঞতা আমাদের নবনির্বাচিত সদস্যদের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে, বিধানসভার গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও সমুদ্রিত রাখতে অনুপ্রাণিত করবে। আমার এই শুভকামনার মধ্য দিয়ে আমার আজকের বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। শুধু সবাইকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার মাননীয় লোকসভার অধ্যক্ষ ও এমপি বিড়লা মহাশয়কে, শ্রী এম বিড়লা মহাশয়কে। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। Thank you, sir, for your valuable insight. May I now request Professor Ashim Kumar Ghosh, Honorable Governor, Haryana, for his address. I am really extremely fortunate and happy to be present at this august occasion when West Bengal is at the crossroad of history. It is a defining moment in the life of the people of West Bengal. They have, through long struggle, emerged out of dark tunnel to the broad daylight. The challenge before all the members of the House are huge and gigantic. It is with their solemn duty to wipe away every tear from every eye
of the people of West Bengal. A new West Bengal is struggling to be born. The hopes and aspirations of the people, their sufferings and tribulations have to be taken care of. And I, for one, am more than confident that the members, honorable members of the legislature, the honorable member of the executive, the head of the state, and the head of the government will rise to the occasion and play a creative role in removing poverty and disease, ignorance and superstition, frustration and unemployment from the land of West Bengal. Sri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of West Bengal, Sri Om Birla ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Harivansh, Deputy Chairman Rajya Sabha, Sri Ratindra Bose ji, Speaker West Bengal Legislative Assembly, Sri Taposh Rai ji, Industry Minister West Bengal, Sri Shankar Ghosh ji, Parliamentary Affairs Minister West Bengal, dear Honorable Speakers of various states, distinguished members of West Bengal Vidhan Sabha, delegates, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to address this valedictory session of the orientation program on parliamentary practice and procedure for the newly elected members of the 18th Legislative Assembly of West Bengal. This gathering is far more than a formal event. It is a celebration of our vibrant parliamentary democracy and a reaffirmation of our shared commitment to constitutional values. Such orientation, such upgradation deliver justice, opportunity, and development to the last person standing in the queue. West Bengal has enriched India's intellectual, cultural, and democratic traditions. Through the enduring legacy of Gurudev Rabindranath Tagore, his message of universal humanism, harmony, and service to society reminds us that public life is not merely about the exercise of authority, but about the pursuit of justice, compassion, and the common good. As legislators, you have the privilege and responsibility to carry forward these ideals in your service to the people. I extend my heartfelt appreciation to all the delegates for their enthusiastic participation and thoughtful deliberations during this session. My sincere gratitude also goes to the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Sri Om Birla ji, whose visionary leadership and firm commitments have made this important initiative possible. His efforts to strengthen parliamentary institutions and promote dialogue among legislators deserve our highest appreciation. Dear members, the vision of an inclusive Viksit Bharat, as dreamt of by our Honorable Prime Minister, calls for the collective dedication of every public representative. As legislators, you are entrusted with the served and sacred responsibility of translating this vision into meaningful action that reaches every citizen. The four pillars of Viksit Bharat
youth, poor, women and farmers must remain at the heart of our policy making and governance. Parliamentary democracy is not confined to enacting laws. It is equally about ensuring accountability, transparency, inclusiveness, and a responsive governance. True progress is measured by our ability to deliver justice, opportunity, and development to the last person standing in the queue. As I conclude, I urge all the members to devote your time, energy, and wisdom to empowering the underprivileged and fulfill their aspirations. Your conduct inside and outside the House should inspire public confidence and strengthen democratic institutions. With your permission, I repeat, your conduct inside and outside the House should inspire public confidence and strengthen democratic institutions. Let us work with dedication, integrity, and a spirit of cooperation to build a prosperous, equitable, and compassionate West Bengal. I congratulate the West Bengal Legislative Assembly and its Speaker, Sri Yatindranath Bose, for the exemplary arrangement that he has made and has made this two-day session a grand success. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your words of wisdom. May I now request Sri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha, for his address. पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण समारोह के समापन समारोह में हमारे बीच में पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री RN रवि जी, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और उस अनुभव का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा राज्य के महामहिम प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, जो बंगाल की धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने बंगाल के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य लेखन सहित यहाँ के बदलाव के लिए एक लंबे समय तक जिनका अनुभव रहा, उनके अनुभव का लाभ हमें मिला है। अभी कुछ दिनों पहले CPA के सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा में भी हमें उनका मार्गदर्शन मिला था। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, दिशा देता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र बोस जी, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस विधानसभा के अंदर प्रशिक्षण समारोह आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक जिनके विधायक रहने का अनुभव है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव है, अभी
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहता है, तपस राय जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, उड़ीसा की अध्यक्ष, सिक्किम के अध्यक्ष और अन्य माननीय अध्यक्ष महोदयों का भी, सांसद महोदय का मार्गदर्शन आपको मिला। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, निश्चित रूप से मुझे पश्चिम बंगाल में बहुत सालों बाद आना हुआ। मैं 7 साल से लोकसभा अध्यक्ष के नाते दायित्व निभा रहा हूं, लेकिन इस विधानसभा में लंबे समय बाद प्रशिक्षण समारोह आयोजन हुआ और प्रशिक्षण के साथ देश और राज्य के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका मार्गदर्शन मिला। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती पर तप तपस्या से जो अल्प आयु के अंदर जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद देश और दुनिया के अंदर, उस कालखंड के अंदर उन्होंने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का ध्वज लहराया, नेतृत्व किया। उनको याद करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी को जब हम याद करते हैं तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति शरीर रहे न रहे, लेकिन व्यक्ति का जीवन दर्शन, उनका विचार, उनका कर्तव्य और लंबे समय तक उनका दिया गया योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन भी देश के युवाओं को सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक नेतृत्व को एक नई दिशा देता है। हमेशा ऊर्जा की, समर्पित भाव की, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हम मानव जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और युवाओं की ऊर्जा का सामर्थ्य क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है। और आपको भी यही दायित्व आज मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है। ये विश्वास, ये भरोसा कायम रहे। हम उनके विश्वास, भरोसे, उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करें और इस राज्य के विकास की नई इबादत भी लिखें, क्योंकि ये राज्य हमेशा विचारों के, आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति और अलग अलग कालखंड के अंदर एक नए बदलाव को, राष्ट्र को नई दिशा देने का राज्य रहा है। और इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कालखंड की विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके विधानसभा के अंदर आपके वक्तव्य, आपके विचार, आप संसदीय संवाद, चर्चा, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, चुनौती और उनको सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है। और मुझे खुशी है, 2 दिन तक आपने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है, वह आपके जीवन में नई दिशा देगा। लेकिन सीखने और अनुभव और विचारों का साझा करने में कोई विराम नहीं होता।
ये तो हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज अनुभवों को साझा करना पड़ता है। और तकनीकी डिजिटल युग में तो हमें रोज देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप यहां से नई चेतना लेकर जाएं और जीवन में इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता कि आपको विधानसभा का नेतृत्व करना, राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है। और हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक बने। हम एक विधानसभा के विधायक हैं, यहां हमारा नेतृत्व हमें करना चाहिए, लेकिन राज्य के आकांक्षी राज्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कार्य योजना, कानून बनाना, राज्य के विकास, नवाचार, उसमें किस तरीके से विधानसभा संवाद चर्चा से हम राज्य को नई दिशा दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और इसीलिए जीवन में हमेशा उत्साह रहे, उमंग रहे, पैर में चक्कर रहे, हमेशा अपने क्षेत्र सहित राज्य में घूमते रहें, पैर में चक्कर, सीने में आग हो बदलाव की, नया देने की, और सिर में ठंडक हो। जब संवाद करें, चर्चा करें, तो ठंडे दिमाग से चर्चा करें। जब जन संवाद करें तब भी, और विधानसभा के अंदर भी। नारेबाजी करना, सदन को व्यवधान करना, सदन के गतिरोध करने से कभी कोई नेता नहीं बनता। अगर सदन का नेता बनना है तो तर्क से बात करनी होगी, तथ्यों से बात करनी होगी, विचारों का सम्प्रेषण करना होगा, और किस तरीके से जो कुछ भी अनुभव है, उस अनुभव को इस विधानसभा के माध्यम से, और जो नवाचार कर रहे हैं उस विधानसभा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम करें। इसलिए विधानसभा का ये लोकतंत्र का मंच बहुत प्रभावी होता है। यहाँ से बनने वाला हर नेता राज्य और देश का नेतृत्व करता है। इसलिए मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि सीखने और सिखाने के साथ जो कुछ भी समाज जीवन के अंदर एक मतदाता से आप कुछ चीजें मिलेगी, विधानसभा के अन्य सदस्यों से मिलेगी, अन्य विधानसभा के सदस्यों से विचार मिलेंगे। हमेशा विधानसभा के अंदर जब आप अपने विचार को रखें तो सब आपके विचारों को सुने। जब आप तर्क रखें, तथ्य रखें, विचार रखें, देश और राष्ट्र हित भी हो, प्रदेश की जनता में बदलाव कैसे किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आप समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज आप। जनता आपको इसलिए चुनकर भेजती है कि आप उनकी कठिनाइयों, उनकी चुनौतियों को तो सदन में रखो सही, लेकिन उसके साथ साथ इस राज्य के विकास के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी आप हो। और यही मंच रहता है। सरकारों को भी हमेशा सबके विचारों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि सरकारों को भी विधानसभा के एक इस कक्ष से जो आवाजें मिलती है, जो अलग अलग स्वर मिलते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग विचार मिलते हैं, हर विधानसभा की कठिनाइयां, चुनौतियां मिलती है, उसको सरकार अगर सकारात्मक रूप से ले कि एक विधायक ने एक प्रश्न उठाया तो क्यों उठाया है, क्या कठिनाई चुनौतियां थी, एक विधायक ने अगर प्रदेश की कुछ चुनौतियां उठाई है तो क्यों उठाई, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है
तो समाधान होता है, और समाधान होने से ही राज्य का विकास होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रहपूर्वक है कि जीवन में सादगी रखें, शुचिता रखें, व्यवहार में विनम्रता रखें, लेकिन हमेशा प्रदेश के विकास की आग आपके सीने में लगी रहनी चाहिए। हमेशा लोगों के विश्वास भरोसे को और मजबूत करने का काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब इस विधानसभा की चर्चा संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। हम इसकी उच्च कोटि की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा हो, जहां चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े, जहां पर सब विचारों को आए, सबके अनुभव आए, और निश्चित रूप से उन अनुभवों का लाभ समाज और देश को मिले। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब कानून का विषय हो तब हम जनता से फीडबैक भी लें, सरकार को सुझाव भी दें, विधानसभा में कानून बनते हुए अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि कानून जनता के लिए बनते हैं। जब विधानसभा कानून बनाती है तो हर विधानसभा सरकार का एक ही मत रहता है कि उस कानून से उनके जीवन में कैसे सुगमता आ सकती है, उनकी जीवन के अंदर जो दिनचर्या के काम में जो अवरोधक आते हैं उसमें अवरोधों को दूर करने में काम आती है। और इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, रिफॉर्म, हर चीज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। एक आम व्यक्ति की चुनौतियों के अंदर सरकार का कोई भी सिस्टम अगर चुनौतियां बनता है तो उसका समाधान, उसका रिफॉर्म इसी विधानसभा से निकलना चाहिए। हमें एक आदमी को जितनी हर कार्य में सुगमता हो, एक आदमी को लगे कि ये शासन मेरा है, ये शासन के विधायक मंत्री मेरे जवाबदेही से काम कर रहे हैं, उतनी शासन की सफलता होगी। और इसलिए आपकी सफलता भी ये होगी कि आपके पास अगर एक सामान्य व्यक्ति भी आता है तो सामान्य व्यक्ति का वो कागज जो उसकी आकांक्षा है, वो कागज नहीं है, उसके सपने हैं। आप उसके कागज को, उसकी आकांक्षा को, उसके सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं? जवाबदेही से काम करना। अगर एक सफल विधायक बनना है, जवाबदेही, उत्तरदायी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में शुचिता हो, हम समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज हमारे मार्गदर्शन पे चलता है। इसलिए राजनीति के अंदर, सामाजिक जीवन में हमारा जीवन जितना साफ सुथरा, हमारा जीवन जितना आम जनता के लिए सुलभ होगा, हमारा जीवन लोगों को पारदर्शी नजर आएगा, उतनी ही आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, संसदीय संवाद की गरिमा को बढ़ाएंगे, तथ्यों तर्कों से इस विधानसभा में चर्चा करेंगे और ये राज्य की विधानसभा समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे, जवाबदेही से काम करे, उत्तरदायी शासन प्रशासन पारदर्शी बने। इसके लिए आप कटिबद्ध होकर, कड़ी मेहनत होकर काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी को, विधानसभा की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया। लगातार जीवन में हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे, अनुभवों को साझा करते रहेंगे, विचारों को साझा करते रहेंगे और अपने ज्ञान को अर्जित करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। Thank you, sir, for your enriching words.
May I now request Sri R.N. Ravi, Honorable Governor of West Bengal, for his address. हमारे बीच उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतीन्द्र बोस जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री श्री तपस राय जी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम तथा अन्य राज्यों के विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष महोदय और महोदया, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सारे माननीय सदस्यगण, at the very outset, I express my sense of gratitude to the Speaker, Vidhan Sabha, West Bengal Assembly, Sri Ratindra Bose ji, for giving me this opportunity. And I am indeed grateful to Lok Sabha Speaker Sri Om Birla ji for making the team of pride, this Parliamentary Research and Training Institute for Democracy team, to come and share with our newly elected members. And I know that a large number of those among you are first-timer, how to make the best of your new responsibility in the Assembly. You are fortunate, my dear friends, that you had the advantage of listening to so many stalwarts, so many veterans, those who have spent their lifetime in public service. We heard Honorable Lok Sabha Speaker mark his every word, every advice, think over it, and try to translate it in your day-to-day life. Friends, as a member of this Legislative Assembly, each one of you must bear in mind that you are not just an individual. You carry the dreams and aspirations of millions of your people. And when you come to the House to make the best use of your presence in the House, some technical advice has been given to you by Team Pride. Think over those and practice. Friends, we know that Assembly, a constitutional, supreme constitutional institution in the state, it functions on a tripod. The first strongest pillar is the Constitution.
And I urge you all to familiarize yourself as much as you can with the provisions of the Constitution. Unfortunately, after independence, Constitution, which is supposed to be the public document and the document for the people of this country, it has become the domain of a few handful of experts, especially of the legal fraternity. That shouldn't be the case. Honorable Prime Minister launched a year-long campaign for constitutional awareness among the schools, colleges, everywhere. And it's all the more important for our newly elected members to be familiar with our Constitution. And when I say familiar with the Constitution, what I intend to say is that over the time, there have been attempts to deviate from the soul of the Constitution. I urge you all to find time, go to the library of the Assembly and read the Constituent Assembly debates. I'm again very thankful to the Lok Sabha Secretariat for producing 5 volumes of Constituent Assembly debates. It won't be possible to read in a go, but as and when you find time, something of your interest, go and see. Because every article of the Constitution has been introduced after a long debate. And how the deviation have happened over the time, if you are conscious of it, you know what you would be doing. For example, take the case, there have been some debates, people have made noise about federalism. Is there a word called federal in our Constitution? It doesn't exist. There has been a long debate. Some members had thought of calling Bharat as a federal state, and it was rejected. Why was it rejected? The soul of the Constitution you must understand. Spend some time in the library. Then comes rules and regulations. Every institution functions on the basis of rules and regulations. They are very crucial. The team Pride has given you some inputs. Internalize that, follow that. And then comes the convention, the traditions of the institutions. These are equally important. Friends, Assembly is not just a constitutional institution. It is also a moral institution. The way Assembly conducts its business, the way you conduct yourself in the Assembly, it reflects on the status of moral evolution of the people of the state. Never forget for a moment that you represent millions of your people and your conduct reflects on all those people. And it is essential, crucial rather, that we must act with dignity. Friends, democracy is not something which is new to our country. We know that Bharat has been the mother of democracy. And our democracy is not just limited to parliamentary democracy. It is an integral democracy, democracy in every walk of our life. Evolution of Bharat itself was built on the principles, the core principles of democracy, which is there in our sanskar of a common man. May not be literate, but yet you will find that. The 3 fundamental principles of democracy. One, equality. Everyone is equal. There is no big, there is no small. It's there in our Rig Veda. Te ajeshthar, akanisthar, udvidho amadhyamash. Ajeshta, you are not big. In the collective of, our Veda says, in the collective of people, there is no big, there is no small, there is no in between. You are all equal.
The principle of equality has not come given to us only through constitution. It has been there in our sanskar. It has made this Bharat possible. Another pillar is diversity of opinion and resilience towards acceptance of diverse views. Again, our Veda, Rig Veda says, Ekam sada vipra baudha vadanti. One truth you will speak. There could be multiple interpretations, multiple ways of, numerous ways of explaining it. Be patient, listen. This is a land where we have principles like anekantavad. There is nothing called one principle, one line. There could be multiple. Be tolerant, be patient, listen to that. This is the fundamental of an integral democracy. And then, deliberations, healthy deliberations, discussions, and attempt to make decisions through consensus in which everyone feels the ownership of the decision. Again, our Veda says, Sangakshadvam samvadadvam samve manansi janata. Move together, speak together, listen the mind of each other. So these are inherent in our civilization. This is what is called, this is what has made our civilizational consciousness and civilizational democracy. It is there. And so your conduct outside the hall, outside the assembly is equally important. Perhaps most of the time in a year, you would be spending time outside the house. And your effort should be to make the difference in the lives of our people. I know you would all be concerned about it. You would be doing what you need to do. But taking advantage, I am also aware of the fact that this is a Samapan Samaroh, this is a valedictory, and I shouldn't be taking much time. But having got the opportunity, I would like to urge you a few areas where you may make a difference and you can make a difference. In our state, take the case of education. In our state, which used to be the center of gravity, intellectual center of gravity of the country, which used to show the light, today in education, we are way behind. Our net enrollment ratio in high school is only 40%. Means 60% of our youth who should be going to school are not going to school. Now, can you each one of you in your constituency can make it a movement to ensure they meet the parents, tell them, encourage them, why is it that the children are not going to why? They must go to their school. Imagine today, in the age of today, when a person does not go to the school, what kind of citizen that person would be? What kind of dreams and aspirations that person could be? They are our future. Please work and see that the students, the youth who are school going, they should go to the school. Make it a movement. Encourage the institution of parent-teachers meeting, because we know that in the government schools, things need to improve, whether the teachers are coming to schools. Let the parents ask the question. Parents, teacher, engagement should be more and more, and you can be the catalyst. You can encourage them. You don't have to be education officer, district education officer to do that. You can do that. You can make the difference. Take the case of health. Now, thanks to the change, Ayushman Bharat is there rolled out in our state. Now, can you make it? Can you make it your mission that in your constituency, no eligible person is left out of Ayushman Bharat? Make it a movement. See that every eligible person gets Ayushman Bharat card. It's make enormous difference in the life of the poor man.
5 lakhs rupees insurance coverage is a big cushion, is big help. Not only that, can you think of encouraging yoga club in the villages of your constituency? It doesn't need money. Thanks to our Honorable Prime Minister, yoga is our international movement. Now, can we make this movement in our own constituencies? Fitness, healthy India, healthy citizen is crucial to our Viksit Bharat. Make it. There are many ways you can improve the health situation of your constituents. Take the case of our farmers, agriculture. We know our farmers have been in distress for various reasons. Many a times, they suffer from lack of productivity, proper guidance. What is the land, which crop it is appropriate, it is suitable for? Land which no water or water scarcity has a different capacity to produce different kind of food, like millet. Now, can you do one thing, which many states are doing? Can you integrate the farmers with the agricultural university? In our state, we have 2 agricultural universities. Their responsibility is not merely to produce agricultural graduates. Link the farmers with the agricultural university, and our university should be able to guide our farmers on WhatsApp, on mobile. There are many states which are doing it, but unfortunately we are not. Now as an opportunity, it makes a change in the life of the farmer, their productivity. Sometimes they have a problem, some disease. They take WhatsApp photo and send it. They tell them this is the disease, and then they prescribe the treatment also. It makes life of a farmer so much easier. Kindly think of it, connecting the farmers with the agricultural university. And as a chancellor of agricultural, all the universities, I assure you, you will have full cooperation. Another area, Krishi Vigyan Kendra. In our state, we have 23 Krishi Vigyan Kendra. They are grossly underutilized. I find there is a very poor connection between the Krishi Vigyan Kendra and the farmers. Can we connect them? They are supposed to be the guide. They are supposed to tell the farmers in the respective area what is good for them. First of all, there is also, we need to connect KVKs with the farmers. As I told you, as I suggested that farmers with the agricultural university, farmers with KVKs. In a state, we have 23 KVKs. To me, it appears it's less in number. A Tamil Nadu, a state of 8 crores, has 38 KVKs. A state of 11 crores should not be happy with just 23 KVKs. We need to have more KVKs. But whatever KVKs you have, move, connect with the farmers, improve the lot of the farmers. Take the case of industry. We know this state was the most advanced, among the top few most advanced industrial state in the country at the time of independence. Today, it is just the opposite of it. Now, in your constituency, wherever you are, you will find the industries which are in a poor state, either sick or they are struggling. Would you like to connect with them, see their problem? You may be able to help them resolve some of the problems. Sometimes I have seen, in a short time I have seen in this state, an industrialist had put up a beautiful plant, but just 2 kilometers there is no connectivity, so they feel completely insulated, isolated. 2 kilometer connectivity is not a big deal. You can make the difference. So, industry, you know that this is what gives us employment, this is what gives us the wealth. Not only existing industries, but even MSME.
Today, the capital is easily available. Small industries can crop up. Our state is rich. Let us say there are areas where we grow a lot of mangoes. I had occasion to have a close look at the Mango Research Institute, and I was disappointed. We have not been making good use of them. Similarly, we have so much potential for food processing, agro-based industries, so many industries. Not necessarily the big one, even the small one. I think we can encourage our youth to be entrepreneurial. And one area of which the state has always been proud is our culture. The state is replete with institutions which are of great historical importance, cultural significance, plenty of them. This state has produced perhaps the largest number of freedom fighters, revolutionaries. Their locations are all in a bad shape. They are almost forgotten. Can you identify in your own constituencies all such locations which have been ignored, which are in a bad situation, which are dilapidated or abandoned? Can we do something to revive, rejuvenate? And you know, for this we don't need even government support. There is a lot of inherent strength in our society. Mobilize the people. They do that. Our Prime Minister always mentions about Sajjan Shakti, Samaj, Sajjan Shakti. There is a lot of sleeping Sajjan Shakti in our society. We need to motivate. The state where I was before, by mobilizing the people, hundreds of temple ponds which were all filled and forgotten, they were revived. People did it, not even 1 rupee of government. A lot can be done. Can we make this state, our state, beautiful state, restore its cultural vibrancy? I'm sure you all will do that. Today we all know that after a long waiting, we are witnessing a new dawn. And whichever area I go and meet, I see that reflected glow of the new dawn on the face of our people. There's a lot of hope, a lot of expectations. With our effort, all of you, we can make this dawn grow into a beautiful, bright day with a lot of sunshine over us. I'm sure you will do that. We are all fortunate to be at this time when the country under a visionary leadership is marching towards her destiny to be the leader of the world. Bengal, which was the leader of the country, must regain its position, and it will do it. Thank you very much. My warm greetings to all of you and best wishes to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your inspiring words. We now request Sri Taposh Roy, Honorable Minister in Charge, Department of Industry, Commerce and Enterprises, Department of Public Enterprises and Industrial Reconstruction, and Department of Non-Conventional and Renewable Energy Sources, Government of West Bengal, to propose the vote of thanks. Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Ji Birla, I'm taking the opportunity to let you know that I'm your fan. Because of your unique style of controlling the House, the members, and the way you conduct the House, the proceedings of the Parliament. His Excellency, the Governor of West Bengal, Mr. R.N. Ravi Shah, His Excellency, the Governor of Haryana, Professor Ashim Kumar Ghosh,
the Speaker of West Bengal Legislative Assembly, Honorable Rothindra Bose, the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Assembly, the Honorable Speaker of Sikkim Assembly, the Honorable Speaker of Odisha Assembly. This is my actually proud and privilege today to be here amidst this august gathering. My dear senior members of this House, ministers, and newly elected members, colleagues, ladies and gentlemen, with hearts brimming, with gratitude and minds illuminated, with new learning, I stand before you today to offer a humble vote of thanks. As we draw the curtains on the most enriching two-day orientation program, over these 2 days, the venues have been transformed into a veritable Vidyapith of democracy. From the luminous inaugural address by the Honorable Speaker Sri Om Birla to the wise counsel of our Honorable Chief Minister and Honorable Speaker of West Bengal Legislative Assembly and other luminous personalities, dignitaries who were present yesterday and today and made valuable deliberations. We have been guided through sacred corridors of parliamentary practice, legislative procedure, committee work, budgetary oversight, and the digital promise of NEVA. To our distinguished resource persons and chairpersons and the erudite faculty of PRED, we owe a debt of appreciation. You have reminded us that being an MLA is not merely a title but trust, a responsibility, and a calling to serve to my fellow members. We entered as strangers of different parties. We depart today as companions under one oath. Many this fellowship outlive our debates. Let us carry from here a renewed reverence. With this I conclude. Jai Hind, Bande Mataram. Thank you, sir, for your thoughtful address. We will now conclude the valedictory session with the national song and the national anthem. May I request all to rise, please. Kala